Hello friends, welcome to my channel. In this video I'm going to discuss introduction to Thomas Hardy and his writing style. And his name, don't confuse it, right? It's also pronounced as Thomas Hardy or Thomas Hardy, right? So किसी भी writer को समझने के लिए उसकी intro and his writing style is very important, because this writing style is also reflected in their work as well. So थॉमस हार्डी की राइटिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करेंगे एंड विल रिलेट इट विथ हिज नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव विच इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एंड आई आल्सो कवर द नॉवल एज वेल. ठीक है, डिस्कस कर लेंगे एंड आई आल्सो प्रोवाइड यू द नोट्स. सो स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल. So without wasting time, let's get began. Introduction to Thomas Hardy. Right, he was a novelist, poet, born on 2nd June 1840, England. ठीक है, इंट्रोडक्शन में इतनी ज़रूरी नहीं है कि यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिज फैमिली एंड थिंग्स लाइक दैट, inherited the love of reading and books from his mother and things like that are not important. And he wrote novels, short stories. Yes, in your third semester in short stories you also, I think, you just study Thomas Hardy as well. ठीक है, उसकी शॉर्ट स्टोरी थी. एंड आफ्टर द हॉस्टाइल रिसेप्शन दैट वाज अवॉर्डेड टू दिस इज नॉट नेसेसरी. सो उसकी राइटिंग स्टाइल को समझते हैं. हिज इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द कंट्री साइड, राइट, एंड द लाइफ ऑफ वेसेक्स वाज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग, क्योंकि वो खुद वेसेक्स में रहते थे एंड वेसेक्स वाज अ कंट्री साइड, अ रूरल एरिया, राइट. सो दिस प्लॉट, right, this setting of Wessex is found in his writing, and in Return of the Native novel we'll see the setting of rural area, right, and like Wessex, here there is an imaginative place known as Edgecombe Heath, right, in Return of the Native. उसको हम देखेंगे, जो कि रिमोट एरिया है. मीन्स यू कैन से दैट इट इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट सीम्स लाइक दैट. इस तरह का सेटिंग उन्होंने दी है. एंड देन द मैन नेचर रिलेशनशिप रिमेन वेरी इंडिफरेंट टू मैन ऑफ हिज राइटिंग. और उसकी राइटिंग में मैन और नेचर का रिलेशनशिप पाया जाता है. ठीक है, इन रिटर्न ऑफ द नेटिव में हम देखेंगे कि हाउ मैन इज़ कनेक्टेड विथ नेचर. ठीक है, और जो करेक्टर्स नेचर यानी एडगन हीट यानी नेचर के साथ उनका कनेक्शन देखेंगे, एंड हाउ दैट इन्फ्लुएंस देयर लाइफ एंड सर्कमस्टांसेस एज वेल. एंड इन फैक्ट हार्डीज ट्रैजिक विजन इज़ अ पार्ट ऑफ हिज पेसिमिज्म. अच्छा, ट्रैजिक स्टोरीज होती है, ट्रैजिक एंडिंग होती है उसकी राइटिंग में. एंड इन रिटर्न ऑफ द नेटिव में भी हम देखेंगे ट्रैजिक एंडिंग होती है, डेथ होता है यूस्टेशिया एंड वाइल्ड डेव का. and the whole story is a tragic, right, full of such bad incidents, right. And Hardy pessimism, that is very important. Hardy is characterized as a pessimistic writer. ठीक है, उसको पेसिमिस्टिक राइटर कहा जाता है. पेसिमिज्म क्या है? यू नो अबाउट पेसिमिज्म, आई थिंक सो. पेसिमिज्म मीन्स द होपलेसनेस, इस तरह की चीज़ है, राइट. डिस्करेजमेंट, होपलेसनेस पाई जाता है. एंड हिज कैरेक्टर्स, हिज प्रोटैगनिस्ट इज़ द मोस्ट पेसिमिस्ट, राइट, इन एटीट्यूड एंड इन नेचर. हार्डी के जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो पेसिमिस्टिक होते हैं. ठीक है, उनको इस तरह पोर्ट्रेल करता है. एंड रिटर्न ऑफ द नेटिव में हम देखेंगे कैरेक्टर ऑफ क्लिम जो कि प्रोटैगनिस्ट है नॉवल के, वो बहुत ही पेसिमिस्टिक होते हैं, राइट. इट्स अ ह्यूज टॉपिक टू डिस्कस, राइट, पेसिमिज्म इन हार्डीज वर्क. मैं सेपरेट वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लूँगा इन डिटेल. एंड देन द रोल ऑफ फैट इज़ प्रोमिनेंट इन हिज वर्क. रोल ऑफ फैट, उसको फैटलिज्म भी कहा जाता है. हार्डीज फैटलिज्म रोल ऑफ फैट, दैट the fat is everything, it controls your action and man has little control over his fate or the situations. ठीक है, उन्होंने इस तरह पोर्ट्रेल किया है कि उनके फ्री विल, करेक्टर्स के फ्री विल का वेरी लिटिल रोल है. एंड फेट इज़ प्रोमिनेंट, राइट. उनको फेट है जो उनको ड्राइव करते हैं उनके एक्शंस को. ठीक है, फेट, रोल ऑफ फेट
and fatalism. These are the same things, and we'll also find it in the return of the native as well. And then the characters are helpless victims in his creations, and his man thinks that he owns the land, but land actually is the omnipotent. Land here refers to the nature. एंड देन हार्डीज फेमस वर्क और रिटर्न ऑफ द नेटिव, ठीक है, आपके सिलेबस में डिस्कस कर लेंगे। और दूसरे वर्क्स में मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज है जी, ठीक है। एडगन हीथ, देखो हीथ का मैंने आपको बताया था। द सेटिंग है, जगह का नाम है रिमोट प्लेस एंड इमेजिनरी प्लेस, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव। एंड देन हिज रियलिज्म, ठीक है, रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल करता है। एंड प्रोज स्टाइल, कैरेक्टराइजेशन, सोशल क्रिटिसिज्म, सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसाइज करता है, सोशल क्रिटिसिज्म पाया जाता है उसके वर्क में। इन हिज नॉवेल्स आर वर्क ऑफ अ सोशल कमेंट्री, सोसाइटी के ऊपर कमेंट्री किया है, सटायर है। एंड ही वाज अ फियर्स क्रिटिक ऑफ द पॉवर्टी, पॉवर्टी को डिस्कस किया है थॉमस हार्डी ने उस अन्य वर्क्स में। एंड देन मेलंकोलिक टोन पाया जाता है, द टोन इज पेसिमिस्टिक, मेलंकोलिक, राइट, इस तरह का। एंड देन मेलंकोलिक, यू नो, गमगीन। एंड देन मिस्ट्री एंड सस्पेंस पाया जाता है उसके वर्क्स में। थॉमस हार्डी एज अ नॉवलिस्ट, में राइट ये उसकी वो है, उसके स्टाइल में रीजनलिज्म यानी रूरल एरिया उसकी सेटिंग होती है। एडगन हीथ इन रिटर्न ऑफ द नेटिव, राइट, रीजनल नॉवेल्स कन्फाइंड टू हिज डिस्ट्रिक्ट, दैट इज वेसेक्स, right, importance of Wessex. Hardy's novels are confined to Wessex, that's where he belonged from. And another reason for confining the outlook of his novels was that his district is timeless and unchangeable, as Edgar Heath in the novel Return of the Native, which is timeless and unchangeable, and it has its own history, culture, superstition. Yes, superstitions पाए जाते हैं थॉमस हार्डी के राइटिंग में. Another very important aspect of his writing, superstitions, and we will also find superstition in Return of the Native as well. सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे डिटेल में रिटर्न ऑफ द नेटिव थॉमस हार्डी के. His idea of writing, he believes that a novel should not argue a case for or against something, but instead it should be an imprecision, writer's imprecision of life. And then Hardy's Return of the Native is that family relationships are tragic. Yes, tragedy tragic होती है, pessimism पाया जाता है, melancholic tone, ये सारी चीज़ें डिस्कस की है हमने. एंड हार्डी इज़ इंटरेस्टेड इन ह्यूमन एस्पिरेशन एंड रिलेशनशिप्स, लव, मैरिज, फैमिली, ये सारे सेंट्रल थीम्स है नॉवल के, वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. एंड अदर फीचर्स में वी आल्सो फाइंड एम्पल रेफरेंस टू क्लासिकल वर्क्स ऑन क्लासिकल राइटर्स. ठीक है, एल्यूजन पाया जाता है, रेफरेंसेस पाया जाता है क्लासिसिज्म का. ठीक है, राइटर्स का, होमर्स का उसने अलूजन रेफरेंस दिया है अपने वर्क में. एडिपस एंड सोफोक्लेस का भी दिया है. एंड दैट्स ऑल अबाउट हार्डी. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वाचिंग.